So friend, this is my online net touch plus channel. This my channel. I'm continue network course related video. Okay. So watch paper video very important for you. What is a network? What is a network history of a computer? And use of network connection. Why this use the network communication? Network diagram. I am already told you about topology. What is a topology? Okay, understand about topology. What is a topology? And how many type of topology available? What is a session layer? My last previous video very important for you understand about on this topic, session layer technology. So session is one type of connection between two communication and checking everything, terminating and remote application in local system using a full duplex, half duplex and simplex operation. One type created, established, production, check and pointing, suspending and restarting one type of terminating session. So this is the OSI model is a layer of responsible to gracefully crossing session. It is very helpful for your communicate to another side of computer. So this session layer using PDU3 protocol data unit 3, and this is checking everything your applications environment and the remote possibility of calls, and this is a session check your recovery and systematic data of communication. Session is using a protocol data unit 3, and this is a very using of a system for reconnecting and data communicate automatically set up these session systems. Okay, and this is the first type of created already some reload your connectivity and restart your connectivity. So this is a network and internet connection one type of communicate. So today I'm continue transport layer and transport layer of a system. So first you want to understand about my previous video, either you cannot understand transport layer. So let's start and understand about a new of layer transport layer. So let's start. तो फ्रेंड्स वीडियो शुरू करने से पहले मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि इस तरह से आपको यूट्यूब में पहले आपके जीमेल से लॉगिन कर लेना है, मोबाइल हो तो मोबाइल से लॉगिन कर लेना है, यूट्यूब ओपन कर लेना है या यूट्यूब की एप्लीकेशन आप ओपन कर सकते हो। ओके, यूट्यूब की एप्लीकेशन या फिर ब्राउज़र में इस तरह से आपको टाइप करना है कंप्यूटर नॉलेज इन ट्रेनर। ये इस तरह से आप इसको जैसे ही टाइप करोगे तो यहाँ पर आपको ये जो है आपको इस तरह से देखने को मिलेगा। ये चैनल है मेरी। ओके, अब इस चैनल के अंदर आपको ये जो देख सकते किस तरह का आइकॉन भी है और आपको इसके ऊपर इस तरह से कनेक्ट आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर कंप्यूटर नॉलेज चैनल का जो मैंने ये पुराना नाम है, ये सोशल नॉलेज एंटरटेनमेंट, ये जो पुराना मेरा चैनल का नाम है, हालांकि मैंने बदला नहीं है क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो। तो इस तरह से आप मेरे चैनल पर आ जाओगे। यहाँ पर बहुत सारे आपके कंप्यूटर की कोर्स की वीडियो मिलेगी और बहुत ही इम्पोर्टेंट और एडवांस लेवल पर जितना आप नॉलेज नहीं समझा होगा उतना ज़्यादा आपको सब कुछ मेरे चैनल पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर जैसे ही नीचे स्क्रॉल डाउन करते हो तो बहुत सारे आपको अलग अलग तरह की आपको वीडियोस मिल जाएंगे। वीडियोस पर जैसे क्लिक करोगे तो और भी बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर हार्डवेयर, नेटवर्क, सॉफ्टवेयर, यहाँ तक कि एडवांस एथिकल हैकिंग और सर्वर की भी वीडियो लेकर आऊँगा। तो जितने भी प्लेलिस्ट है आपके सामने देख सकते हो। पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करना है, जिससे कि जितने भी मेरी नई वीडियो होगी वो आप मिस ना कर दो और टाइम टू टाइम आपको पता चल जाए कि ये नई वीडियो जो है और नया जो भी कॉन्सेप्ट होता है, जो भी आपको सिखाने के लिए एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, वो आपको मिल जाएगा। तो आपको सर्च इसी तरह से करना है कंप्यूटर नॉलेज ऑन ट्रेनर के नाम से। ओके, तो जैसे प्लेलिस्ट पर आप क्लिक करते हो तो आपको प्लेलिस्ट में बहुत कुछ आपको मिलेगा। अगर आप कंप्यूटर में नए हो, आप कंप्यूटर के बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो आपको जो भी आपको बेसिक से आपसे स्टार्ट कीजिए। ओके, तो जिसको रेड हैट लिनक्स पढ़ना है, जिसको एथिकल हैकिंग पढ़ना है, वो आपको मिलता रहेगा कंटेंट में। तो जो नई टेक्नोलॉजी माइक्रोसॉफ्ट के बारे में
तो माइक्रोसॉफ्ट से शुरुआत कीजिए। यहाँ पर आपको बेसिक से शुरुआत कीजिए। आप हार्डवेयर का ज़्यादातर मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, जैसे कि जितना हो सके मैं इसको कम्प्लीटली कंप्लीट करूँगा इस कोर्स को। फिर नेटवर्क का आप देख सकते हो कि नेटवर्क का कोर्स जो है, जिनको नेटवर्क नहीं पता, कंप्यूटर की प्रॉब्लम में आता है, नेटवर्क का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं, एडवांस लेवल पर कंप्यूटर की पॉलिसी वगैरह, ऑपरेटिंग सिस्टम किससे इंस्टॉल करते हैं ये भी समझा है यहाँ पर, वो भी बताया है यहाँ पर। विंडोज 7, 8.1, विंडो 10, 11 सब कुछ। और गूगल के अंदर डिफरेंट टाइप के ब्लॉगर वगैरह जो होती है, इनकी प्रोडक्ट्स वगैरह, और भी जीमेल वगैरह, पेटीएम क्या होता है, और भी बहुत कुछ आपको मैंने समझाया यहाँ पर। ओके, तो जितने भी आप देख सकते हैं कि एंड्रॉइड क्या है, एंड्रॉइड की ट्यूटोरियल्स और मोबाइल डिवाइसेस वगैरह वो भी अपलोड करता रहता हूँ। जीमेल के बारे में आपको पता नहीं है, जीमेल क्या है, कैसे काम करता है, किस तरह से इसको अपडेट, इसके नए नए फीचर्स आए वो भी देखिए। और कंप्यूटर के कप के अंदर हर विंडोज़ के अंदर कंट्रोल पैनल होता है, कंट्रोल पैनल की प्लेलिस्ट है। तो आप शुरुआत कीजिए विंडोज बेसिक्स से। ओके, विंडोज 7 बेसिक्स। अगर आपको कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं पता तो विंडोज 7 बेसिक्स से शुरुआत करोगे तो आपको पता चलता रहेगा टाइम टू टाइम। ओके, तो यहाँ पर आप ध्यान दे सकते हो कि उसके बाद आपको शुरुआत करनी है यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट की सॉफ्टवेयर से। ओके, तो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट जो है बेसिक ऑफिस वगैरह, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, उसके अंदर काफ़ी एडवांस लेवल पर मैं सिखाया यहाँ पर। उसके बाद आप कंट्रोल पैनल के बारे में समझिए, इसके बारे में आप समझिए और देखिए। सभी वीडियो मेरी पार्ट वाइज होती है, ध्यान से। ओके, और साथ ही फिर आपको जो है यहाँ पर कंप्यूटर हार्डवेयर का नॉलेज लेना है कि कंप्यूटर के अंदर कौन कौन से पार्ट्स वगैरह जो होती है, कैसे काम करते हैं, एडवांस फीचर्स वगैरह, और भी हैकिंग वगैरह समझनी है। फिर एक रेडे लिनक्स करके भी आता है यहाँ पर, ये भी बहुत पॉपुलर है, ये भी कोर्स बहुत पॉपुलर है, तो ये भी देखिए। तो सभी वीडियो कोर्स जो है वो जेन्युइन है और काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है यहाँ पर, आपको समझने के लिए ही मैंने आपको बताया यहाँ पर। और फायरवॉल क्या होता है, फायरवॉल क्या होता है, फायरवॉल टेक्नोलॉजी क्या होती है, ये सब कुछ मैंने समझाया यहाँ पर। ओके, तो जैसे जैसे मैं कंटिन्यू करता जाऊँगा, नया नया वीडियो अपलोड करता जाऊँगा। ओके, तो इसके अलावा मेरे फेसबुक पेज के ऊपर भी आप विजिट कर सकते हो। ओके, तो फेसबुक पेज के ऊपर मैं टाइम टू टाइम जो है मैं अपना सिस्टम जो है अपना जितना भी हो सकता है उतना उसको मैं कंटिन्यूसली अपडेट करता रहता हूँ। तो आप मेरे फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं यहाँ पर। ओके, तो कोई भी एक इम्पोर्टेंट जो डिफरेंट टाइप की जो लेवल का जो एक, जिन लोगों को पता नहीं होता है कि कोर्सेज वगैरह जो होती है वो किस तरह से इम्प्लीमेंट होती है यहाँ पर, इसके अंदर यूज़ कैसे होता है, इन सबको मैंने यहाँ पर दे सकते हो कि मैंने हर टाइम टू टाइम में अपना सिस्टम के वगैरह जो है यूज़ और अपलोड करता रहता हूँ यहाँ पर। ओके, तो जितने भी प्ले लिस्ट है उनको वन बाय वन समझिए। ओके, ऐसा नहीं कि डायरेक्टली मुझे ये सीखना है, आप सीख सकते हो। अगर आपके पास पहले से बेसिक का नॉलेज है तो आप चाहते हो कि हार्डवेयर की नॉलेज लेना चाहते हो तो हार्डवेयर की नॉलेज ले सकते हो। उसके अलावा आप नेटवर्क पढ़ना चाहते हो नेटवर्क भी पढ़ सकते हो। सर्वर की वीडियो अभी आने की थोड़ी देर लगेगी, सर्वर की टेक्नोलॉजी आने में थोड़ी देर लगेगी, क्योंकि हार्डवेयर और नेटवर्क दोनों का पूरा कोर्स पूरा होने के बाद मैं सर्वर का वीडियो लेकर आऊँगा। ओके, तो बेसिक से शुरुआत कीजिए। अगर कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं पता, इसे क्लिक करोगे तो सभी वीडियो जो होती है मेरी पार्ट वाइज होती है। ओके, तो इस तरह से वीडियो देख सकती है कि जो है आपको देखनी है वन बाय वन करके। ओके, और जितने भी कॉन्सेप्ट होती है विंडोज 7 से लेके, जिनको पता है कंप्यूटर क्या है, किस तरह का काम करता है, तो आप बेसिक से शुरुआत कीजिए। ओके, और जिनको एडवांस लेवल पर सीखना है तो हार्डवेयर वगैरह सीखिए, नेटवर्क वगैरह सीखिए। ओके, तो मैं जितना हो सके मैं डिटेल में एंटर किया हुआ है कोर्स, और पुराना नेम आपके सामने है और नया नाम मैंने एंटर करके रखा हुआ है। तो चले हम वीडियो को शुरुआत करते हैं और सभी वीडियो को पार्ट वाइज ही देखिए। So transport layer name is now, and you can see name showing of a work layer. So transport layer, what is the transport layer? First understand about how computer you are traveling data. One computer to travel to another side data traveling, and any side anywhere you are using as a accessing file in folder, sending email, receiving email, you are watching online video, live streaming, and different type of
everything sending data in internet, your local network, even your one computer to another side computer. So how your data traveling and transferring? So that is a work is only transport layer. Okay. So transport layer is not directly transferring. This transport layer depending on network layer. Okay. So what is the network layer? I will discuss in next topic. Okay. Next this layer. So transport layer, you can see here, this is a one type of a very important of a part of OSI layer. Engineer, network engineer decide to how your data traveling in the internet in cable through, wireless through. So you are using any type of a cable, BNC connector type cables. We are using RJ45 or crystal core cable. We are using a fiber optical cable, any type of cable. So that is responsible for traveling data, transferring data is a transport layer. And the second main point is data completely transfer. Completely means not any data changing in original form. Okay, same as it is. You are watching Facebook. You are watching any type of Google. Every side, any side, you can see was completely website. So that is a responsible of completely transferring data in your computer. That is a responsible of transport layer. But sometimes you can see in your computer not completely showing it's completely open website because your low connectivity, low internet connection speed. So transport layer not perfectly data downloaded. Why? Because the transport layer is one type of need to transferring data of one to another site. Is one type of connectivity. Google company have a lot of thousand of requests and lot of thousand transporting data. But in your area, in your system, in your computer's system, inside your low internet connectivity, so not completely data download from internet through. So how this transport layer data work? First understand it. First time give example. First created a point-to-point topology engineer, network engineer. I am created already video. What is a point-to-point topology? Watch my previous video. So you want more to understand about the point-to-point topology. So understand about point-to-point topology. Two computer you can see here. An engineer first time connect to one wire BNC system, BNC connector connect here, and one wire connect to other computer side. It was created topology old generation time, but not properly functioning, not properly data traveling, because not OSI layer defined in one to another side. So engineer first time of defined to trouble for computer because not communicating, not transferring data, not sending and receiving data, not understand how this data traveling, transferring. So engineer have one type of solution created, one type of DOS system. DDoS means a DOS of the system, and create in one type of file OSI layer technology. Communication one to same as it is create one side and same it is file create other side, and OSI program created and to communicate to one type of, and after connect so automatically transferring data one to another side. So how this possible? Depend your layer of OSI layer. Okay. Today this time generation without OSI layer not communicate, not in not data sharing, sending, receiving, not open website. Everything depend on OSI layer. This is a very important of part. Why? Because OSI layer is a communication help for communicate to another side of transferring data, receiving data, and everything point to point side. Okay. So you are in using today this generation time UTP cable, STP cable,
fiber optic cable every side, any side. Important is part how you communicate and how many type of speed your system. Okay, understand about it. Second is you are using any side, any network type of technology. You are using campus area network, home area network, wire area network, any side, any network technology, any network type. Okay, satellite system, and everything, any side, wireless system, any side. Important is your layer, how working. Okay, so that is the transferring data of transport layer. Okay, the transport layer is a provide function and procedural means of transferring variable length data sequence from a source to a destination host. This is a very important to understand about. Not directly you download in 1 minute, 1 second and not download completely movie. Not in 1 second download in your video any type of software. How this possible function to one by one. You can see here sometime download manager software. Very sometime give a timing showing and after completely download. So how this possible? Internet download watching software and some sequence wise some part wise downloading, and after completely all of merge data same on in the file. That is a one type of transport layer system. So what they say of this transport layer of definition? Transport layers provide functional and procedure means transferring variable length. Variable length means how many distance, how many length of your data traveling. Okay, and all of data how traveling sequences. Okay, one type of sequence, one type of part your data, and from source to a destination host. Source to destination host means this company. Okay, just suppose this company, okay, server is here and this home, this is school. Understand about. So any type of data is software created this company, and this school need download to software. So starting download not directly you in 1 second download. Sequence wise, completely part wise is a connect transferring data to and download completely here. Okay, not directly quickly. Okay, so while maintaining the quality of service function, that is a very important. Maintaining quality of services means how type of network speed, how many type of your network areas are CPU. Okay, so transport layer is define variable length to one to another. So source to destination. Source means you can see here you the www.google.com type in search. So that is your destination system of your server. Server going to request and server accept, and server again reply to and reply showing, and you can see your page open in 1 millisecond. Okay, so how this possible? There is a transport layer is a very destination to host area size. Same as it is, I'm give to one example. This person XYZ any, and this person ABC. Okay, so this person is sending request hello. So going to site, that is a destination, and this is going to source. Okay, so this is going to sending down directly hello. Hello is one type of a part sequence wise. I will show you in some data sequence or what is our sequence wise, and transferring to one to another side by cable through. Okay, but it is one transport layer. Second is a transport layer control the reliability given link through flow control. That is a very important for understand about. Sometimes you are watching YouTube and your internet slow, so sometimes load in your application side. Okay, very type of load in sometime again that continue showing continue watching your movie, your video. How this possible? That is a one type of flow control, one type of
link queue, okay, and transferring of a variable of length, okay. And second is segmentation and desegmentation. What is a segment and what is a desegment I will discuss. And error control. Error control means sometimes your data not complete, so showing in your computer, in software, any type of a program, any type of your browser, not this data is complete, not data is downloaded. So how this message give your software, your browser, this is a service by this transport layer, okay. Some protocols are state and connection oriented. This is a very understand about some protocols. State and connection oriented means you are connected in your initial server, just like you are open a bank website, and you are downloading any type of a data document from your account. So first is check is you are authentic, you are authorized, and you are real of person. So some verification of process, and after you download bank statement, okay. So that is one type of transport layer, one by one to another side, transferring data and receiving data, okay. TCP IP header, TCP service protocol, that is a working of a protocol. So protocol without transporting protocol not working and not transferring data one to another side, okay. This is a very important. So how this wireless and wireless area side and internet you are watching in your mobile devices, in your tower, how you work. So that is using a OSI layer, okay. Everything OSI layer using of communication of protocol, network protocol, okay. And the TCP IP protocol available every side. You are using network services, just like using any type of network devices using. Even your mobile devices, computer devices, your laptop, your smart TV, everything you are using network technology, network devices. So you already watch in OSI layer in operating system, software system inside some protocol, okay. So without protocol is one type of program, one type of part of services of already company give and downloading function in one type of files. So protocol is a communication way to how to data you travel data one to another side. Sometimes your data not perfectly download. So how this again to reconnect, and same as it is there is a miss data, again to reconnect and recover and showing and reconnect after showing re-downloading again. So that is working by transport layer, okay. The transport layer is a create segment out of the message receiving from the application layer, okay. So transport layer not directly transferring data, transferring original data, original form file, one type of small parts create, small parts means small segment create, and out of a message receiving from application layer, okay. So that is a completely transferring transport layer data, transferring data in your computer, and this layer pass through session layer pass presentation layer pass to application layer, okay. So that is a one type of transport layer, is a one type of process. Segmentation is a process for dividing long message into small message, okay. So that is a segment process, how dividing long message to into small messages. So segment is a one type of a very sequence and small of part of divided in smaller messages, because this is not data directly function transferring. Why? Because TCP and IP header is important for services, and transport layer network need to any type of message not missing and not miss out this some connection time lose, some connection not completely not communicating, sometime your data half for download, and sometimes your data may be missed. So that is one type of services type of created by network engineer, one type of showing
flow control, so in the segment type of sometime error control. Okay, so that is a one type of controlling, transferring, and error correction, error controlling. So it is a one type of transferring data. Okay, so any worldwide, any type of using internet connection, either you not using connection internet, but you are connect to one to computer, another computer in your intranet, so that is using the same as it is transport layer. Without transport layer, not transfer your data one to another side. So transport layer depend on only network layer. Okay, so I will discuss connection oriented communication, how data transferring. Okay, I will show you completely practically and how this connection oriented communication, this is a very important for next of transport layer, because this is important layer of transport layer, and some people not understand how data traveling in one to another side. Okay, so every devices transport layer very important, and every devices have using the OSI layer, OSI technology. Okay, so without OSI technology, OSI system, not you cannot start. Okay, so transport layer depend on network layer. So what is a network layer? Network layer I will discuss in some topic. Okay, but this is a very important for understand about how internet and net in your company network and some your computer and your Android device, how to data traveling, transferring data. So this is work on the transport layer through. Okay, so next time I will continue connection oriented communication with a transport layer practical. So thank you, have a nice day. Next time I will continue on this topic. So any questions, so comment me and I will give an answer in 24 hours or 24 hours. I will try. And thank you, have a nice day. Click on subscribe button, click on bell icon for new notification when I upload new video, so you maybe not miss. And this reason click on bell icon. So any comment, so comment me and reply will 24 hours. So thank you, have a nice day. Next time I will meet you connection oriented. So thank you, have a nice day. देख सकते हैं कि यहाँ पर और भी एक जैसे कि विंडो 10 के लिए भी अलग मैंने प्लेस बना रखी हुई है। तो विंडो 10 के अंदर भी आप अलग अलग तरह की इन्फॉर्मेशन, जैसे तो कि विंडोज 10 के अंदर भी, तो विंडो 10 की भी आपको जानकारी मिलेगी। यहाँ पर डिफरेंट टाइप की अलग तरह की विंडो 10 की यहाँ पर सीरीज है। ओके, तो हर विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी सेटिंग्स होती है, किस तरह की सेटिंग्स होती है, विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी फीचर्स होती है, ये भी रखा हुआ है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर आपकी विंडो 10 के अलावा कंट्रोल पैनल भी है। कंट्रोल पैनल के अंदर भी आपको जानकारी कंट्रोल पैनल क्या होता है। ओके, और आप इसी तरह की कंप्यूटर हार्डवेयर का कोर्स आपको ये इम्पोर्टेंट है, ये अभी सीखिए। और कंप्यूटर नेटवर्क का भी कोर्स कंटिन्यू कर रहा हूँ यहाँ पर। ओके, तो जहाँ पर आपकी जिस फील्ड के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, साथ ही मैंने जीमेल किस तरह से बनाना, जीमेल क्या है, जीमेल पोर्ट फॉरवर्डिंग, जीमेल सिस्टम, जीमेल आईडी के अंदर क्लोनिंग किस तरह से करी जाती है, यहाँ पर जीमेल के अंदर किस तरह से हम लेबल क्रिएट करते हैं, यहाँ पर ये भी सिखाया मैंने यहाँ पर। ओके, तो आगे जाके आप देख सकते हो कि और भी बहुत सारे यहाँ पर वीडियोस है विंडोज 10 के यहाँ पर। ओके, तो मैंने पेटीएम, मिंत्रा, याहू, ट्विटर क्या होती है, ट्विटर के कौन कौन सिक्योरिटी फीचर कौन कौन से, फेसबुक क्या है, फेसबुक के अंदर कौन कौन से फीचर्स वगैरह होते हैं, यहाँ पर मैंने बताया यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको देख सकते हैं कि और भी बहुत सारे आपको बेसिक कंप्यूटर यूजर पर क्लिक करना है, यहाँ पर बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के ऊपर, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जब तक आपको कोई कंप्यूटर की नॉलेज नहीं, तो आप बेसिक पे ही स्टार्ट कीजिए। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और कुछ में फ्रॉड कॉल वगैरह होते हैं, कुछ वेबसाइट, कुछ कमांड के अंदर क्या करना है, कम फायरवॉल किस तरह से यूज़ करना है, ये भी मैं बताया यहाँ पर। तो मैं आगे नेक्स्ट लेवल पर बताऊंगा। ओके, एंड्रॉइड का भी मैंने समझाया, एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन के अंदर क्या होती है, किस तरह से। तो वीडियो पर जैसे क्लिक कर तो बहुत सारे आपको वीडियोस मिलेंगी, लेकिन मैं कहूँगा कि आप प्लेलिस्ट में जाकर ही हर तरह के यहाँ पर वीडियोस को कंटिन्यू करें। ओके, तो सभी वीडियोस जो होती है पार्ट वाइज होती है। ओके, तो हर पार्ट के अंदर आपको अलग तरह की नॉलेज मिलेगी। ओके, और कोई भी क्वेश्चन होता है आप मुझे कर सकते हो। अभी ये जो मेरा नेम है वो पुराना नेम है क्योंकि मैंने रखा हुआ है, लेकिन जो रियल नेम है आपको इस तरह से
सर्च करना है यूट्यूब की प्लेलिस्ट के अंदर, आपके मोबाइल के अंदर और आपके कंप्यूटर के अंदर भी आप यूट्यूब चलाते हो, तो इस तरह से आपको कंप्यूटर नॉलेज ट्रेनर यही नाम एंटर करना है। लेकिन मैं पूरा नाम इसलिए रखा हुआ है क्योंकि आपको पता चले कि ये दोनों चैनल एक ही है मेरी। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव नाइस डे। नेक्स्ट टाइम आई विल कंटिन्यू न्यू टॉपिक, मैं नए कंप्यूटर में कंटिन्यू करूँगा। ओके, तो थैंक यू।